So requesting the Royal Challengers Fatorda captain to kindly send any member you can come to select the match ball which will be taken for your side. Two deliveries remaining in this final over. 14 runs to get. Now Diptesh Kerkar is the only person who can take the game away from here on if he delivers an extra. Even 2 sixes won't cost much. This is the first hit. And one more wicket for Diptesh Kerkar. What a gem of a player that Diptesh Kerkar has been for amazing Super Giants. And amazing is a team to watch as they can bring any surprise at any moment as they are the amazing boys. Right now, amazing Super Giants. So beautiful over concluded by Deep Kerkar. And now all the eyes will be on the prize that is man of the match. Let's see who it is going to be. So the jury is out at the commentary box deciding who is going to be man of the match. Thank you, DJ. So now it's time to decide the man of the match. There were a couple of performances with the bat, with the ball. Meanwhile, the team meeting is on, requesting amazing Super Giants to kindly conclude your meeting as soon as possible as the fielding team is already out in the middle. And the man of the match of this match is none other than the lucky charm who has been included in the team. Diptesh Kerkar defending 16 runs in the final over has taken 2 wickets. What a gem of the bowler. Diptesh Kerkar has been a man of the match in this match. A lucky factor that has been included in the team and delivering for the team in the last over. Diptesh Kerkar, kindly come and collect your man of the match. And meanwhile, over to Ashok G. Naik. ऑरेंज कैप के हकदार ओमकार देसाई और
पर्पल कैप भूषण कोहली। तो धन्यवाद सागर गोस्वामी, एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स में जुड़ जाते। नया मुकाबला मैदान पर दो टीमों के बीच में। थैंक यू डीजे, धन्यवाद अजय जी। टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला रॉयल चैलेंजर्स पातोड़ा क्रिकेट टीम का। फील्डिंग के लिए मैदान पर रॉयल इंडियन क्रिकेट टीम। ओपनिंग जोड़ी मैदान पर प्रजेश उर्फ विक्की नाइक स्ट्राइक एंड पर सामना करते हुए पहली गेंद का पावर प्ले का पहला ओवर टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला रॉयल चैलेंजर्स पातोड़ा क्रिकेट टीम का और रॉयल इंडियंस क्रिकेट टीम मैदान पर फील्डिंग करते हुए। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जिग्नेश पटेल लोअर पुल टॉस गेंद को ड्राइव किया। इस बार का एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर गेंद को फील्ड करते सिंगल के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ रॉयल चैलेंजर्स क्रिकेट टीम का। प्रजेश उर्फ विक्की नाइक और पहला ओवर जिग्नेश पटेल कमेंट्री बॉक्स की ओर से लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए आगे निकलकर खेलना चाहते थे। इस बार लेग कटर टिप्पा खाने के बाद गेंद कट होकर बाहर की तरफ निकले विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छी गेंद, इस बार तेज गेंद, पिछली गेंद थोड़ी सी लेग कटर, इस बार तेज गेंद पुलर लेन की गेंद, गेंद ऑफ स्टंप को छोड़कर चली गई विकेट कीपर के हाथों में। सईद और प्रजेश उर्फ विक्की नाइक ये ओपनिंग जोड़ी मैदान पर टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला मैदान पर। बड़ा शॉट देखना होगा, मिस टाइम कर बैठे फील्डर, लेकिन थोड़ा सा दूर थे। सिंगल बना, सिंगल के साथ दूसरे रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक 2 रन पूरे होते हुए स्कोर के खाते में। बहुत ही शानदार मुकाबला रहा पिछला मैच। अमेजिंग सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम ने मुकाबला जीता 6 स्टार 6 सुपर 6 क्रिकेट टीम के साथ। एक बहुत अच्छा मैच रहा। दीप केरकर की शानदार गेंदबाजी। इस बार फिर से लेग कटर गेंद, बहुत अच्छा विकेट कीपिंग। फ्रंट फुट पर गेंद को ड्राइव करना चाहते थे। पहले विकेट के साथ जो कि स्कोर रुका हुआ 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बॅट्समन पण गेलो मरे, कोणाचा आपलं गेलो होय होय मा
सैयद आउट कर वापस पहले विकेट के रूप में सफलता मिलती हुई पहले ओवर में बहुत ही शानदार विकेट कीपिंग, अच्छा कैच पकड़ा विकेट कीपर ने, स्कोर रुका हुआ 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। प्रजेश और विकी नाइक मैदान पर और उनका साथ देने के लिए पिंच हिटर 1 डाउन बैट्समैन सुमित देखले। आज बल्लेबाजी में देखना होगा, इस मैच में दर्शक भी काफी भारी संख्या में मैदान पर, यूट्यूब पर भी कई दर्शक जुड़ चुके हैं इस रात के समय में भी मैच का इस लुत्फ उठाते हुए मजा लेते हुए। और देखना होगा सुमित ढेकड़े मैदान पर, सामने जिग्नेश पटेल 3 रन 1 विकेट पर। पहला ओवर जारी, जो पावर प्ले का ओवर। रॉयल चैलेंजर्स फातोडा क्रिकेट टीम ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। एलईडी स्क्रीन भी लगा दी गई और वहीं पर भी आप देख सकते हैं इस मुकाबले को। फिलहाल अगली गेंद इसी बीच में बड़ा शॉट, बेहतरीन शॉट बॉलर के पास से, एक सुंदर शॉट स्ट्रेट ड्राइव का। और जब तक लॉन्ग अप बाउंड्री पर फील्डर आते गेंद को उठाते, फील्ड करते, 1 रन बन गया स्कोर के खाते में। सिंगल के साथ अपना खाता शुरू किया सुमित डेकले ने और स्कोर आगे बढ़ा, 4 रन पर पहुंचा 1 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर जो पावर प्ले का ओवर, बहुत ही किफायती गेंदबाजी रोहित इंडियन क्रिकेट टीम के ओर से बल्लेबाजी करती हुई रॉयल चैलेंजर्स फातोडा क्रिकेट टीम टॉस जीतकर इस मैच में 6 ओवर के मुकाबले में पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ। 1 विकेट वापस, सैयद आउट होकर वापस, कोई खास अच्छी बल्लेबाजी नहीं हुई। प्रजेश्वर पर विकी नाइक मैदान पर और उनका साथ देने के लिए सुमित डेकले मैदान पर न्यू बैटर। देखना होगा गेंदबाजी में परिवर्तन क्या होता है। बंटी पटेल सामने से दूर वाले छोर से अपने बॉलिंग मार्ग पर, खुद का पहला, टीम का दूसरा पावर प्ले का ओवर समाप्त हुआ। फील्डिंग में तब्दीली मैदान पर, एक अच्छा शॉट आते आते पहली, जो कि एक सिंगल के साथ अपने खाते की शुरुआत करते हुए सुमित देखले और वो सामना करते हुए बंटी पटेल की गेंदबाजी का पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ। 4 रन स्कोर बोर्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर। रॉयल चैलेंजर्स फातोडा क्रिकेट टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई मैदान पर। और बैकफुट पर जाकर कट किया, इस बार का पॉइंट पर बहुत ही शानदार फील्डिंग, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, कवर पॉइंट पर शानदार फील्डिंग। शॉर्ट पिच गेंद थोड़ी सी उछाल लेते हुए कट किया था गेंद को, लेकिन कवर पॉइंट पर बिल्कुल चौकरनी फील्डिंग। बंटी पटेल एक बार फिर से दूर वाले छोर से अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर, ऑफ से छोड़कर बाहर गेंद, ऑफ से वाइड बॉल का इशारा। अतिरिक्त रन स्कोर के खाते में जुड़ता हुआ सिंगल बना स्कोर में और इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर जारी दूसरा, रोहित इंडियंस क्रिकेट टीम जो फील्डिंग करते हुए, गेंदबाजी करते हुए और सामने बल्लेबाजी करती हुई रॉयल चैलेंजर्स फातोडा क्रिकेट टीम। 6 ओवर का मैच, थोड़ी सी तब्दीली फील्डिंग में, फील्डिंग को ठीक ठाक करते हुए विकेट कीपर के साथ लगभग एक स्लिप पर अच्छी गेंद, इस बार बैकफुट पर जाकर डिले हाथों से खेला, गेंद चली गई गली की तरफ। 1 रन के लिए निकले तो तेजी के साथ दोनों बल्लेबाज और एक सिंगल जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। कोई बड़े शॉट का मौका नहीं दे रहे। शुरुआत की थी जिग्नेश पटेल ने, लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाजी और उनके बाद बंटी पटेल आकर, जो कि विकेट पर ज़्यादा मदद मिल रही निश्चित तरफ से बंटी पटेल के। अगर मैं बात करूंगा आज सुबह से जो तेज गेंदबाज देखने को मिले, विकेट पर थोड़ी सी उछाल है, अनियमित बाउंस है और वहीं पर बल्लेबाज थोड़ा सा जो कि चौक जाते हैं बल्लेबाजी में। राइट आर्म ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर एक बार फिर से अगली गेंद लेकर,
वाइड बॉल का इशारा। इस बार अतिरिक्त उछाल मिला गेंद शॉर्ट पिच बाउंसर। वाइड बॉल के साथ एक रन भी जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। थोड़ी सी धीमी शुरुआत मैदान पर। बल्लेबाजी में जो टॉस जीता और पहले फील्डिंग जो कि बल्लेबाजी करने का फैसला रॉयल चैलेंजर्स पातोड़ा क्रिकेट टीम का। बंटी पटेल एक बार फिर से दूर वाले छोर से अपने बॉलिंग मार्ग पर खेल दूसरे ओवर का जारी। मैदान पर दो बैटर, एक और जो कि सुमित देखले और उन्हीं के साथ ब्रजेश उर्फ विक्की नाइक। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लगा, गेंद चली गई स्लिप की तरफ। शॉर्ट थर्ड मैन पर लगभग फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते एक रन फिर से मिल गया स्कोर के खाते में। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, कोई खास समझ नहीं पाए थे गेंद के बारे में ब्रजेश उर्फ विक्की नाइक। फिलहाल सिंगल बना स्कोर में और स्ट्राइक एंड पर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सामना करेंगे और उनके लिए राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर बंटी पटेल अगली गेंद लेकर सुमित देखले स्ट्राइक एंड पर। अच्छी गेंद इस बार हल्के से बैकफुट पर जाकर खेला गेंद को, रन लेना चाहते थे, शायद थोड़ी सी भिड़ंत हो गई मैदान पर गेंदबाज और बल्लेबाज के बीच में। दूसरा रन नहीं बना, लगभग गली पर वाइडिश गली पर गेंद को फील्ड करते और एक सिंगल बना स्कोर के खाते में। एक रन खेल समाप्त जो कि इस गेंद के साथ और एक गेंद जो कि समाप्त होती हुई और स्कोर बोर्ड पर स्कोर रुका हुआ 9 रन। कहीं ना कहीं थोड़ी सी रन गति को बढ़ाना पड़ेगा मैच को आगे बढ़ाने के लिए। दोनों बल्लेबाजों के से एक को तो जोखिम लेनी पड़ेगी। फिलहाल देखना होगा कौन लेगा, सुमित देख ले या सामने ब्रजेश उर्फ विक्की नाइक। शफल हुए, इस बार खेलना चाहते थे फाइन लेग पर, गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा और एक रन मिला स्कोर के खाते में। स्कोर 2 अंकों में डबल फिगर में आगे बढ़ता हुआ 10 पर पहुंचा, 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही शानदार साउंड सिस्टम सर अजय सर हमारे साथ जुड़ चुके TennisCricket.in से। सर्वे सर्वा सर संतोष जी नानेकर, उनकी पूरी टीम, कैमरामैन वो भी पूरी टीम जुड़ चुके हैं इस टूर्नामेंट के साथ। LED स्क्रीन पर भी ये शानदार जो कि दृश्य जो कि आपको देखने को मिल रहा है, जो खेल हो रहा है वो मैदान पर LED स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। विराज तेंदुलकर हमारे साथ, हरीश काकोड़कर और सागर गोसावी और मैं अशोक नाइक आप सभी के साथ। एक बार सभी उपस्थित दर्शक, सभी मंच पर विराजमान मान्यवर, आप सभी का स्वागत कमेंट्री बॉक्स में से। रिवर्स का प्रयास, पुलर लेन की गेंद, अच्छी गेंद, इस बार हल्का सा अपील जरूर था। एक अच्छी गेंद थी, रिवर्स का शॉट खेलना चाहते थे लेकिन बिल्कुल गेंद आकर पैरों पे टकराए। डॉट गेंद के साथ बंटी पटेल धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर। हवा थोड़ा सा जो कि ठंडक बढ़ती हुई मैदान पर। बढ़िया शॉट इस बार बल्ले के बीचों बीच, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर और बहुत ही शानदार फील्डिंग और एक सफलता मिलती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। तो दूसरा विकेट, कहीं ना कहीं रनों की तलाश में थे बल्लेबाज और वहीं पर जो कि थोड़ा सा आक्रामक रवैया अपनाए हुए थे, लेकिन आउट होकर वापस सफलता मिली बंटी पटेल को। खेल वहीं पर रुका हुआ, स्कोर बोर्ड पर 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर रॉयल चैलेंजर्स पातोड़ा क्रिकेट टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए। थैंक यू डीजे। 2 ओवर का खेल और 10 रन स्कोर बोर्ड पर, 2 विकेट के नुकसान पर 10 रन। ओपनिंग जोड़ी वापस, सैयद और उन्हीं के साथ ब्रजेश उर्फ विक्की नाइक। 2 बल्लेबाज सुमित डेकले लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, बड़े शॉट के लिए जाने वाले
और उन्हीं का साथ देने के लिए न्यू बैटर राजेश कावकर मैदान पर। देखना होगा गेंदबाजी में परिवर्तन होता है या नहीं मैदान पर। गेंदबाजी में परिवर्तन एजाज कुरैशी दिखाई देते हुए पिछले मैच में बहुत ही शानदार स्पेल किया था। मैं तो कहूँगा इनके ओवर के साथ मैच में बदल फर्क हो गया उस पिछले मैच में। और वही खिलाड़ी मैदान पर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, एक से बढ़कर एक इनिंग इस खिलाड़ी ने कृष्णा सातपुते के साथ ओपनिंग जोड़ी में इनका भी बहुत जो कि हिस्सा रहा है उस जोड़ी के साथ, जो कि बल्लेबाजी में अब गेंदबाजी पर अपने बॉलिंग मार्ग पर तीसरे ओवर की शुरुआत। और शॉट ऑफ लेन गेंद ऑन साइड पर एक जोरदार बल्ला घुमाया, गेंद ऑफ स्टंप पर निकली विकेट कीपर के हाथों में। एक अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में एजाज कुरैशी की डॉट गेंद के साथ सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सुमित डेकले उनकी गेंदबाजी का सामना करते हुए 10 रन स्कोर बोर्ड पर, स्कोर रुका हुआ, तीसरा ओवर जारी 2 विकेट के नुकसान पर। फिर से ऑफ स्टंप पर सफल हुए थे, ऑन साइड पर मारना चाहते थे एक बड़ा शॉट। कहीं ना कहीं मालूम है रन रेट बिल्कुल धीमा हो चुका है, रन गति को बढ़ाना चाहिए। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, तीसरा ओवर जारी है और सिर्फ स्कोर बोर्ड पर 10 रन 2 विकेट पर। एक नाजुक शुरुआत, एक धीमी शुरुआत मैदान पर। छोटी गेंद इस बार ऑफ स्टंप का लगभग छोड़कर निकल रही थी, टैप किया गेंद को ऑफ साइड पर, कवर पॉइंट पर फील्डर गेंद को फील्ड करते और बड़ी देर के बाद एक रन जो कि स्कोर के खाते में जुड़ता हुआ सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा, 11 रन पर पहुंचा 2 विकेट के नुकसान पर। राजेश कावकर स्ट्राइक एंड पर एजाज कुरैशी का गेंदबाजी का सामना करते हुए थोड़ा सा फील्डिंग में तब्दीली, क्योंकि लेफ्ट हैंडर के साथ राइट हैंडर बल्लेबाज ये जब होता है मैदान पर तो थोड़ी सी गेंदबाजी के साथ फील्डिंग में कप्तान को तब्दीली करनी पड़ती है। और यही बात मैदान पर ऑन साइड पर डीप लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, एक डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर फील्डर तैनात। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इस बार उछाल लेती हुई गेंद, बल्लेबाज बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद में उछाल थी मैदान पर बिल्कुल, और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। ऑफ साइड पर एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर, एक कवर पॉइंट पर फील्डर, एक डीप थर्ड मैन बाउंड्री पर फील्डर है, एक लॉन्ग अप बाउंड्री पर बिल्कुल सीमा रेखा पर फील्डर। बढ़िया शॉट इस बार लॉन्ग अप बाउंड्री पर, लंबी दौड़ लगाई फील्डर ने, देखना होगा गेंद को रोकते हो या नहीं। फिलहाल बाउंड्री लाइन पर गेंद को रोका, जब तक गेंद को थ्रो करते तब तक 2 रन पूरे होते हुए स्कोर के खाते में। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, गुरुशन जो कि फील्डिंग करते हुए लॉन्ग अप बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग अप बाउंड्री पर, और बड़ी देर के बाद 2 रन जो कि स्कोर के खाते में जुड़ते हुए 3 पर खुद के व्यक्तिगत राजेश कावकर 2 पर। बैकफुट पर जाकर कट करना चाहते थे, इस बार बाहर बहुत तेज निकली गेंद, टिप्पा खाया था ऑफ स्टंप पर, उसके बाद कट होकर और बाहर की तरफ निकली, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। 1 रन मिला स्कोर के खाते में। रॉयल चैलेंजर्स फातोर्डा क्रिकेट टीम जो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर। घूमकर मारना चाहते थे, फिर से गेंद ने हरकत की, गेंद ने काटा बदला, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। एक अच्छा ओवर, सफल ओवर जो कि एजाज कुरैशी का। खेल इसी के साथ 3 ओवर का समाप्त होता हुआ, और 3 ओवर समाप्ति के बाद बल्लेबाजी करते हुए टॉस जीतकर रॉयल चैलेंजर्स फातोर्डा क्रिकेट टीम मुकाबला करती हुई रोहित इंडियंस क्रिकेट टीम के साथ, और स्कोर रुका हुआ 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में परिवर्तन और कमेंट बॉक्स में जुड़ जाते हैं हरीश काकोडकर के साथ। आगे का हल सुना।
So in comes Bunty Patel with the fourth over for the side and second over for himself. Only one over for Jignesh Patel this time and Ijaz Qureshi. Maybe because it's a left-hander on strike that prompted the captain to bring Bunty Patel. That's very nicely cut, but a fielder is placed in the deep. Slight fumble, but never an intention was there for the second. The score is moving along with the singles at this stage, just moved to 15. We are into the fourth over. We have seen how good was the bowling attack of Rohit Indians, and certainly they will be feeling very happy that the score is not moving at a pace which could damage or daunt their chances of going into the semi-finals. This is once again should be wide as it is signaled by the umpire. The two batsmen who are playing on the wicket right now are Rajesh Gaonkar and Sumit Dekle. Sumit Dekle, we had a lot of hope to see him scoring those sixes and boundaries. So far, he has not come right with the bat, hoping that we see lusty blows, some wonderful shot from his side in this innings. Once again, this is way too outside of stump. Easy signal for the umpire to declare it wide. Very well left that ball from Rajesh. Rajesh is right now the man in form in most of the tournaments in Goa. And that's the reason why he was beaten in the auction by the owners of Royal Challengers Fatorda. He has played his part. But overall, if you see, this team has not gelled well as a unit. They have not been consistent enough with their batting lineup and bowling lineups. Oh, cracking ball. Jack back in a long way. It's almost like a cutter bouncer bowled by Bunty Patel. Another dot ball. That pace and that sharp ball coming in with those quick cutters is making difficult for the batsmen. Quick ones those are. This is right in the block hole. Fantastic bowling fielder is coming towards the ball. Chance of a second, but denied. Rajesh goes back on time. Otherwise, that could have been a run out. So far, 4 balls have been bowled and 4 runs conceded. 2 off the wide, 2 off the bat. Still 2 balls left. The reason that off cutters are going to be leg cutters, and those are quick leg cutters for the left-handers, which makes even more difficult for Sunit Dekle. Once again, very nicely played. He knows that Bunty Patel is in his good spell, bowling in the right areas, not trying to take any sort of chances. Takes a single and takes the scoreboard to 19. So with this score moves on to 19. Still 1 ball left of Bunty Patel. Rajesh will be hoping to get a boundary or a 6. Score is going at a rate of less than 6 runs per over. So again, nothing given away. Oh, total mishap. This could have been run out as well. First they wanted the single. Then Sumit might have thought this might be the last ball of that over and sent back Rajesh from halfway. Lucky that it was not a direct hit. Both the batsmen are safe to play the next over. After completion of 4, the score is still 19 for the loss of 2.
Thank you, DJ. So in comes the fifth over. Still the score is not much, hovering around just 19. They require at least somewhere around 45 to 50 if they need to win this match. That's a consolatory victory for Royal Challengers of Fatorda. They are definitely out of this tournament in the league stages itself. But Rohit Indians are still in the race and hunt for the semi-final spot. In comes Gurushant. Gurushant had bowled a magnificent over in the previous match, and now once again, captain giving him the ball, has enough confidence on this youngster. This should be wide, should be an easy signal for the umpire. Ball landed outside the off stump and went, in fact, more away, like an off a spinner. So score moves on to 20. Sumit Dekle once again on strike against Gurushant. This time strikes a big one. He was waiting for that ball and gets a proper connection. 6 runs, first of this innings. Meanwhile, रिक्वेस्ट होता 6 सुपर किंग्स हांचे जितले गोवन प्लेयर्स आसात ताणें माचे कडेन येवचें, स्टेजी कडेन येवचें आनी आपल्या सर्टिफिकेट्स आनी जो अमावंट आसा बिडेड प्रायस जो अमावंट तो मातसो कलेक्ट करचो. This time a very good ball right in the block hole. Good comeback from Gurushant after being hit for 6. So there must have been a talk from the players, senior players to Gurushant. Don't bowl somewhere around a good length where Sumit is going to go after you. Bowl somewhere around the Yorker length region, full length, maybe lower full toss balls. That's exactly what he's doing. You can see the intensity from Sumit. He wants the second run. He wants it desperately and he gets it easily. You can see the itching of Sumita to go on strike. He wants the strike as he feels I can get one more 6 of this over from Gurushant. Score moves on to 28. This was a full toss ball. It was a lower full toss. Sometimes you try to put a lot of force behind it, trying to get a big 6. That's not happening. A dot ball. And the score still on 28. Still 2 balls left of Gurushant's over. 9 runs have come of this over so far. Once again, a big heave over mid-wicket. This time he tries to go for the second. There was no second in it. Fielding has been good. And just 1 ball left. 10 runs of this over so far. Good comeback after being hit for a 6 of the very first ball. With that single score moves on to 29. So Rajesh will be on strike. Rajesh and Gurushant must have faced each other many a times in the local municipality panchayat level tournaments. He goes for the big one. It was just the power. Ball was not close to the bat. A dot ball to finish over number 5. The score still remains on 29 for the loss of 2.
So last over for Royal Challengers Fatorda to get towards that 45-50 run mark. It won't be easy. In comes Sandesh Thakur, one of the finest all-rounders. I already mentioned that he is quite good. In previous match, he just took 2 wickets and hardly gave 3-4 runs. Bowls very well against left-handers most of the times in his career. Another left-arm medium-pace bowler in the rank for Rohit Indians. Once again, another fielder comes into the 30-yard circle, and Sandesh is ready. This is in the air. I always say, what has happened? No one went for the catch. I think the batsman is injured over there. Some problem with his leg. Sumit will be all right. He's a strong man. Wonderful delivery bowled here by Sandesh Thakur. Not bowling in the reach, not bowling in the zone for the bat to swing on the leg side. This is in the air. Has he timed it well? Has it gone for 6? Looks to be a 6. Well, I have not seen a 6 on that side of the ground. That's a big boundary. And still Sumit, in spite of getting injured, scores a huge, high and a long 6. Finally, someone clears that long off boundary for a 6. This is in the air. Has he timed it well? Not well enough. Straight in the hands. Little bit more power than this could have been another 6. But Sumit has to depart as the man was rightly placed at the long on region to take that catch, and he takes it safely. So 35 runs on the board with 3 balls left of the 6th over. This time another single. Score moves on to 36. Still 2 balls left. Sandesh has done a fair enough job, but he has to finish well with bowling 2 good balls, not allowing the target to drift away to more than 40. So again, I was trying to cut that away. Straight to the field. Rajesh wants the strike, but he will not get the strike as the throw came straight in the hands of Sandesh Thakur. Alvino Carvalho has come, and definitely he's going to face that last ball of the innings. He had played a magnificent innings of 35 runs. Had got orange cap as well. This time right in the block hole. Fielder is placed in the covers. Very nicely fielded. Can he stop 2 runs? Oh, what a lovely throw. What a lovely throw. Next to the wickets and bails removed in a flash by Sandesh Thakur. Marvelous fielding side and a great bowling spell from Sandesh Thakur, and also all the bowlers. Jignesh Patel, Bunty Patel, Guru Shant, all bowled well along with Jidas Qureshi. And that's the reason score is just on 37, 38, beg your pardon. 39 is the target. 39 is the target for Rohit Indians to make it into the semi-finals.
Requesting the betting team kindly double up. 39 runs required, but one more match is remaining. So let's not delay the match. 6 overs, 39 runs required. Meanwhile, requesting the captain of Oxford Titans and amazing Super Giants to kindly come for toss. This is the final call for the betting team. Otherwise, there might be some penalty. Let's continue with the game because one more match to be played. So 39 is the target. Two openers already out in the middle. Ijaz Qureshi and Lalla Ram Purushottam Yadav. 39 runs required. And a Gauri strikes on the very first delivery. The timber shakes and the bails out of the spot. Ijaz Qureshi back to the pavilion without even opening the account. So new man in is Sangan Gaus Biradar. Sangan Gaus Biradar immediately goes for the switch hit. No connection whatsoever. Meanwhile, the ball takes the leading edge and travels to the keeper. That's why no signal from the umpire. So a single to open the account of our Rohit Indians. And now Lalla
is on the striking end. Meanwhile, requesting the captain of Amazing Super Giants kindly come for toss. Gaurish Nakvikal, the bowler, right arm over the stumps. Meanwhile, a slight fumble onto his run-up. That's why he decides not to deliver. Immediately, dead ball is the signal from the umpire. Again, slightly towards the leg stump, stretch of arms by the umpire. Wide is the immediate signal. With that, one more run added to the total score, moves to 2. Another change in pace, but way down the leg stump. Wide is the signal from the umpire. Another extra, taking the total to 3. Flicks the ball towards the keeper. Chance of a run out. Direct hit, but away from the stumps. And a single in form of leg by. Total moves to 4. This is the third and final call for the captain of Amazing Super Giants. Kindly come for toss. As the captain of Oxford Titan is waiting for you for the toss. Again, another good pitch delivery close to the legs. Flick shot in action. Ball has been guided towards the short fine leg for another single. And the singles will do it for the batting team. With that score, moves to 5. Again, plays watchfully, taps the ball towards the square leg for another single. With that, score moves to 6. Meanwhile, there was a chance of one more run. So both the matches are crucial for the teams. Again, plays watchfully, guides the ball in the similar area to take one more single. Are they going to for the second? No, they don't. Good throw, equally well backed up. So a single to end the first over. After completion of 1, score is 7 for the loss of 1 wicket. Meanwhile, there's a chance of a catch. Let's see who is going to take it. Fielder under the ball. Takes the catch on the second attempt.
So now new man in is Swapnesh Virip on the striking end. Prajesh Naik, the bowler, takes a wicket on the very first delivery. More 32 runs required. Short pitch delivery cuts the ball away from the fielder and no chance for even any fielder to stop that ongoing incoming boundary. But boundary takes the total to 11. Another low full toss. Ball takes the leading edge, travels to the short third man region. And meanwhile, no ball is the signal from the umpire. So that will give a license for the batsman who is at the striking end, Lalla Yadav, as a free hit is on. Meanwhile, a good delivery. Umpire took his time to declare it as a wide. Wide takes the total to 14. And the free hit will continue. Meanwhile, chance of a catch. Prajesh under the ball. He's not going to miss it. Third wicket back to the pavilion. Meanwhile, it was a free hit delivery. So that makes the batsman to survive. Another good cut shot. Even the fielder was placed. Manages to stop the ball right inside the boundary rope, but won't be able to stop the couple of runs. With these 2 runs, score moves to 17. More 22 runs required. Because the ball much finer, but equally well fielded by the fielder at the circle towards the third man area. Another single to take the total to 18. A good strike towards the cow corner area. Fielder from the circle runs very hard. Collects the ball. Chance of a run out at the striker's end. But Lalla is quick enough. Steals a couple of runs from the fielder. And with these 2 runs, there's a completion of second over. So after completion of 2, score is 20 for the loss of 2 wickets. So more 19 runs required from 24 legal deliveries. Requesting umpires to kindly double up because one more match is to be played and we can't afford to waste
such immense time at this moment. More 19 runs required. Gangaram Ingole with the ball. Pace delivery equally well played. Flicks the ball in the vacant area before the fielder could get the ball. Lalla immediately decides not to go for the second run. So with that single score, moves to 21. A switch feet was on, but could not connect properly. Ball goes directly to the keeper. Again, slightly deviating from line and length, balls towards the leg stump. Wide is a signal that wide takes the total to 22. More 17 runs required. Whether Lalla can go after the bowler, whether he can hit a 6. Scott's onto his knees, ball going away from the field, equally well fielded at the circle towards the fine leg area. Another single to take the total to 23. Meanwhile, wide is a signal from the umpire to put one more run to the total. Score moves to 24. More 15 runs required. Cuts the ball only to the fielder. Chance of a run out, but Lalla looks to be very quick. Manages to take a single. And with that, score moves to 25.
Meanwhile, Gaurish Nagvikar is the bowler. Change of end for him. Bowling from swimming pool end. Right arm over the stumps. A pacey delivery that went straight to the keeper. And Gaurish strikes for the second time in this match. So new man in is Bunty Patel at the striking end. Cuts the ball to this short third man fielder. Meanwhile, chance of the second run, and definitely they are going to run very hard. Going to take every possible single. This couple of runs takes the total to 28. More 11 runs required. A hint of leg cutter, ball going away from the batsman. Wide is the signal from the umpire. With that score moves to 29. More 10 runs required. Whether Bunty Patel has enough power, enough strength remaining with him to get those winning runs in this over itself. Swings the bat very hard, connects it along the carpet. There's a fielder been placed on the boundary rope at the square leg area. Fields the ball, passes it back to the keeper. Another single to take the total to 30. Swapnesh is on the striking end. Now he has the opportunity to finish the match in a style. Wanted to cut the ball. Huge swing towards the point area. No connection. Leaves the ball to travel safely to the keeper. Another good delivery onto the legs. Meanwhile, a single. A single takes the total to 31. Finish the captain now. Again, cut shot in act as a fielder. Gathers the ball quite comfortably, but not able to react. That allows both the batsmen to take a single. And that brings Bunty on the striking end.
Score moves to 32. Just 7 runs required. That's a wonderful strike towards the square leg area. I don't have words to describe this particular cricketing shot, but definitely out of syllabus, out of the books. Was almost falling onto the ground, and still a good hand-eye coordination makes the ball to travel the distance. And this is a wonderful strike. Even the fielder is under the ball, takes a simple looking catch. So Bunty back to the pavilion. A good pacey delivery. New man in is Sherbadur Yadav. Plays forcefully. One is a call. Meanwhile, chance of a run out. That is suicidal. Swapnesh way back to the pavilion. More 3 runs required. Still, Sherbadur has got the chance with him to get those winning runs. And new man in is Jignesh Patel. Will be at the non-striker's end. There is a wonderful strike away from the fielder. Meanwhile, they are running for the second. And they take the second run quite comfortably. Just a run away from the victory. So requesting Oxford Titan players to kindly get geared up as you are fielding first. And that is the winning runs. Congratulations, Rohit Indians, as you have entered in the semi-finals.
So now it's time to honor the man of the match, and it's none other than Bunty Patel. Kindly come and collect your man of the match trophy. I mean, while even requesting the players of Royal Challengers Fatorda to kindly come near the stage and collect your certificate as well as the auction prize money. So all the local players of RCF Royal Challengers Fatorda are requested to come near the main pandal to collect your certificate and the auction money. So requesting the guest at the day is Fahim Sheikh to kindly do the honors. Man of the match of the previous match, Bunty Patel, kindly come and collect your man of the match trophy from the guest of the honor, Fahim Khan, who is waiting for you at the presentation area. Bunty Patel, man of the match of the previous match. I mean, while the final is the last match of the day, this is going to be the must-win situation for both the teams. Whichever team wins will enroll themselves into the semi-finals. So meanwhile, I'm taking a short break, handing mic over to Ashok Ji Naik. थैंक यू सागर। तो आज का आखिरी मैच मैदान पर अमेजिंग और ऑक्सफोर्ड टाइटंस, ये दो टीम आमने सामने। ओपनिंग जोड़ी मैदान पर। पावर प्ले का ओवर, पहला ओवर जारी। बॉलिंग मार्क पर पहले ओवर में प्रीतम बारी। पहली गेंद, बहुत बेहतरीन शॉट इस बार। कवर पॉइंट बाउंड्री पर गेंद निकलते हुए बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए। बेहतरीन शॉट, थोड़ी सी छोटी गेंद मिली ऑफ स्टंप पर, बैकफुट पर जाकर कट किया, स्क्वायर कट। बहुत ही शानदार शॉट चौके के साथ। अर्जुन भोसले और अर्जुन भोसले के साथ ओपनिंग जोड़ी अविनाश गाउस। प्रीतम बारी गेंदबाजी पर पहला ओवर लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। वाइड बॉल का इशारा, एक माफ कीजिए, डेड बॉल का इशारा अंपायर का।
राइट आर्म ओवर द विकेट, फुलर लेन की गेंद इस बार, और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। आज का दिन रात का पहले दिन का अंतिम मुकाबला इन दो टीमों के बीच में। प्रीतम बारी गेंदबाजी करते हुए, राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार एक बैठक शॉट खेलना चाहते थे, ऑन साइड पर रन लेना चाहते थे, अपने फॉलो में तेजी के साथ निकले, गेंद को फील्ड करते रन की संभावना को समाप्त कर दिया। बिल्कुल अच्छा मुकाबला होगा दोनों टीमों के बीच में। अल्टी पल्टी रिवर्स का प्रयास, इस बार फील्डर मौजूद कवर पॉइंट पर, एक सिंगल बना स्कोर के खाते में। अमेजिंग सुपर जायंट्स और मुकाबला मैदान पर एक्सपर्ट टाइटंस के बीच में। जो जीतेगा वो आगे बढ़ेगा, तो बिल्कुल दोनों के बीच में अच्छा मैच होगा। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर, इस बार थोड़ी सी नीचे रही, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई नुकसान नहीं, कोई रन का सवाल नहीं। इस बार और एक डॉट गेंद, और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। पहला ओवर और पहले ओवर के बाद स्कोर हो चुका है 5 रन। गौरेश नागवेकर, राजेश गावकर, दिनेश विनेश सातरकर और राजेश नाइक, आइए प्लीज कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। राजेश नाइक, राजेश गावकर, विनेश सातरकर, आइए प्लीज कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। वो प्रेशर हो गया। रिवर्स का प्रयास, इस बार गेंद विकेट कीपर के पीछे चली गई, सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, अपने अपने क्रीज में सुरक्षित, एक रन बन गया स्कोर के खाते में। खेल दूसरा ओवर, सामने से गेंदबाजी में बॉलिंग मार पर मुख्तार कादरी, एक चतुरस्र खिलाड़ी, होशियार खिलाड़ी, ऑलराउंडर खिलाड़ी मुख्तार कादरी, वो गेंदबाजी करते हुए, राइट आर्म राउंड विकेट, गेंदबाजी करते हुए, बेहतरीन शॉट, इस बार ऑफसाइड पर, एक रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, और एक ही रन मिलेगा क्योंकि फील्डर मौजूद था, सिंगल बना स्कोर के खाते में। दूसरा ओवर जारी, मुख्तार कादरी गेंदबाजी करते हुए। आज का बड़ा शॉट, इस बार बेहतरीन टाइमिंग, लाजवाब टाइमिंग, गेंद चली गई सीमारेखा से बाहर 6 रन के लिए। आप एलईडी स्क्रीन पर जरूर देख सकते हैं, देखो एक बार फिर से आप जरूर देख सकते हैं एलईडी स्क्रीन पर किस तरह से ये शॉट लगाया। राउंड विकेट, मुख्तार कादरी, इस बार ऑफ स्टंप पर छोड़कर निकलती हुई गेंद, बहुत अच्छी कीपिंग विकेट कीपर के, गेंद को कलेक्ट किया,
सामने ओपनर बल्लेबाज जो कि अर्जुन भोसले और उन्हीं के साथ अविनाश कावस्कर पर डब्ल्यू बल्लेबाजी करते हुए ओपनिंग जोड़ी मैदान पर। बढ़िया शॉट इस बार, एक अच्छा शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर, 1 रन मिल गया स्कोर के खाते में। सिंगल डबल बीच बीच में बड़े शॉट, दिन रात का ये टूर्नामेंट आज जो कि ये 10वां मैच आखिरी मुकाबला। और इस बार देखना होगा, गेंद निकली पॉइंट पर, कवर पॉइंट पर फील्डर। मुख्तार कादरी खुद का पहला, टीम का दूसरा ओवर खेल जो कि स्कोर हो चुका है 15 रन टोटल स्कोर, 15 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 2 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 15 रन। स्कोर हो चुका है 15 रन। ओपनिंग जोड़ी बल्लेबाजी, एक अच्छी शुरुआत। और गेंदबाजी में परिवर्तन मैदान पर। सुहास पवार गेंदबाजी के मोर्चे पर। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर। और इसी के साथ बहुत ही अच्छा कैच। सफलता मिली, अच्छा कैच जो फील्डर का। और क्योंकि अच्छा इसलिए क्योंकि बगल में बिल्कुल जो कि कुत्ता दौड़ रहा था। न्यू बैटर मैदान पर मतीन खान। सुहास पवार अपने बॉलिंग मार्ग पर पहला विकेट वापस, स्कोर वहीं पर रुका हुआ 15 रन। तीसरा ओवर जारी, 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, ऑप्टम से बाहर गेंद कट होकर और बाहर की तरफ निकली। वाइड बॉल का इशारा, वाइड बॉल के साथ 1 रन मिल गया स्कोर में। स्कोर से 16 पर पहुंचा, सिंगल के साथ 1 विकेट वापस। 16 रन 1 विकेट पर मतीन खान न्यू बैटर मैदान पर। अंतिम मुकाबला आज रात का है। ये पहले दिन का सफर
कल दूसरे दिन रात का क्रिकेट का ये संग्राम फिर से जारी रहेगा टूर्नामेंट का। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, रन लेना चाहते थे नॉन स्ट्राइक करंट से, लेकिन विकेट के पर तेजी के साथ निकले, गेंद को फील्ड करते रन की संभावना को समाप्त कर दिया। अच्छी गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर, ओवर पिच गेंद थी, फ्रंट फुट पर गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन सफल नहीं रहे, गेंद चलेगी विकेट कीपर के हाथों में। सुहास पवार अपने बॉलिंग मार्ग पर इस ओवर की अगली गेंद लेकर, इस बार सफल हुए, खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, फिर से चूके गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए अच्छा ओवर अब तक चलता हुआ, जो कि ये तीसरा ओवर जारी मैच का। प्रीतम बारी, उन्हीं के साथ मुख्तार कादरी और तीसरा ओवर सुहास पवार का। बढ़िया शॉट, सामने गेंद को ड्राइव किया, इस बार अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते हुए, कोई रन नहीं स्कोर बोर्ड पर। 16 रन एक विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद और एक डॉट गेंद, लेग कटर लेग ब्रेक गेंद, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। बैकफुट पर जाकर ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, ओवर की समाप्ति हुई तीसरे। आज लगभग जो कि रात के समय के दरमियान निश्चित रूप से थोड़े से लो स्कोर के मुकाबले हो रहे, क्योंकि ठंडक शुरू हो चुके, हवामान की अगर अगर वातावरण की बात करेंगे तो बिल्कुल ठंडक है, तो इसीलिए गेंद उतनी तेजी के साथ नहीं सीमा पार नहीं हो रही है। सुबह के सत्र में जिस तरह से बड़े बड़े टोटल का मैच देखने को मिला, और देखना होगा इन दोनों के बीच में मुकाबला किस तरह से समाप्त होता है। दोनों के लिए काफी निर्णायक मुकाबला है, महत्वपूर्ण मुकाबला है, लेकिन कहीं ना कहीं रन गति को बढ़ाना पड़ेगा मैदान पर। अमेजिंग सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम को बैटिंग पावर प्ले का इशारा अंपायर का, जो चौथा ओवर शुरू होता हुआ बैटिंग पावर प्ले का ओवर। और बैटिंग पावर प्ले में देखना होगा गेंदबाजी के लिए कौन आते हैं। अर्जुन भोसले और उन्हीं के साथ मतीन खान, ये जोड़ी मैदान पर एकमात्र विकेट। अविनाश गावस आउट होकर वापस, और 3 ओवर का खेल जो समाप्त, और सिर्फ 16 रन एक विकेट के नुकसान पर। सरफराज नवाज उर्फ चप्पू गेंदबाजी पर, खुद का पहला, टीम का चौथा ओवर लेकर सामने से दूर वाले छोर से। और बढ़िया शॉट इस बार ऑन साइड पर। देखिए एलईडी स्क्रीन पर आप जरूर देख सकते हैं किस तरह से ये शॉट लगा, और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। एक बड़ी देर के बाद हवाई फायर, शानदार टाइमिंग, लाजवाब टाइमिंग। अर्जुन भोसले के बल्ले से दूसरा बड़ा शॉट, स्ट्राइक एंड पर सामना करते हुए जो सरफराज नवाज की गेंदबाजी का 22 लॉस ऑफ 1 विकेट, 22 रन एक विकेट पर चौथा ओवर मैच का चलता हुआ। ऑफ टेम्पर यह गेंद इस बार हल्का सा अपील, थोड़ा सा जो कि दूर से खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले से दूर थी, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। 22 रन एक विकेट पर आज का आखिरी जो कि पहले रात का ये मुकाबला इन दो टीमों के बीच में, ऑक्सफोर्ड टाइटंस और अमेजिंग सुपर जायंट्स, ये दो टीम आमने सामने बल्लेबाजी कर रही है मैदान पर। सामने अर्जुन भोसले,
और मतीन खान ये जोड़ी मैदान पर बल्लेबाजी में गेंदबाजी के मोर्चे पर चौथा ओवर जारी। सरफराज नवाज और चप्पू गेंदबाजी करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट दूर वाली छोर से। शायद थोड़ी सी रुकावट खेल में अर्जुन भोसले। बेहतरीन शॉट इस बार ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर 1 रन तेजी के साथ दूसरे रन के बिल्कुल सोच रहे थे, लेकिन जैसे देखा लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर गेंद को फील्ड होती हुई गेंद और सिंगल बना स्कोर के खाते में। बेहतरीन शॉट इस बार फिर से एक बार देखना होगा गेंद निकलते हुए सीधे फील्डर के हाथों में, तो पहला विकेट दूसरा विकेट इसी के साथ वापस निकलता हुआ। दूसरा विकेट वापस, बहुत ही अच्छा कैच, सफलता मिली, कीमती सफलता मैदान पर जो आउट होकर वापस न्यू बैटर दर्शन बांदेकर। नए बल्लेबाज मैदान पर टैंकू डीजे। सुबह के सत्र में लगभग 12:20 को पहला मुकाबला जो शुरू हुआ था। टोटल 10वां मैच जो ये दिन रात का पहले दिन का, और न्यू बैटर मैदान पर दर्शन बांदेकर। स्कोर हो चुका है 23। कवर पर एक सिंगल बना, स्कोर में सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 24 पर 24 रन पर 2 विकेट के नुकसान पर। 24 लॉस ऑफ 2 विकेट। खेल जारी चौथे ओवर का।
इस बार देखना होगा, गेंद वहीं पर सामने विकेट कीपर आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, रन की संभावना को समाप्त किया दर्शन बांदेकर। और उन्हीं के साथ जो बल्लेबाजी पर अर्जुन भोसले। खेल इसी के साथ समाप्त होता हुआ 4 ओवर का अंतिम 2 ओवर का खेल बाकी, और 4 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 24, 24 रन 2 विकेट पर, 24 लॉस ऑफ 2 विकेट। कंपटीशन आफ्टर 4th ओवर। गेंदबाजी में दिखाई देते हुए सुहास पवार। खेल जारी 5वें ओवर का, सामने दर्शन बांदेकर, नॉर्थ साइकर इन पर अर्जुन भोसले। 4 ओवर समाप्त हुए 24। इस बार थोड़ा सा अपने लाइन पर बैठ के ऑप्टम से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। 1 रन मिला स्कोर में, सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 25, 25 रन पर। बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, इस बार विकेट कीपर के पीछे रनआउट का खतरा बनेगा नॉन स्ट्राइकर इन पर, और इसी के साथ आउट दर्शन बांदेकर, रनआउट होकर वापस। विकेट नंबर 3 वापस। नरेश असोंडेकर न्यू बैटर मैदान पर। एक बहुत ही अच्छी सफलता सुहास पवार को गेंदबाजी पर, और नए बल्लेबाज नरेश असोंडेकर। 25 रन 3 विकेट पर। खेल जारी 5वें ओवर का। इस बार ऑप्टम से बाहर, वाइड बॉल का इशारा, अतिरिक्त रन स्कोर के खाते में। एक सिंगल जुड़ गया, इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 26, 26 रन पर। इस बार आड़े बल्ले से खेला गेंद को ऑन साइड पर, मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर। 1 रन दूसरे के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, और जब तक गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन के साथ से स्कोर पहुंचा 28, 28 रन पर। देखने का कितने रन बनाती थी है जो कि अमेजिंग सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम। काफी महत्वपूर्ण मुकाबला है दोनों टीमों के लिए। फुल टॉस गेंद, इस बार एक बैठक शॉट मारना चाहते थे, गेंद सीधी जाके पैरों पे टकराई। फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते। 5वां ओवर अभी भी ये जारी मैच का। इस ओवर के बाद 1 ओवर का खेल बाकी, और कहीं ना कहीं कम से कम 1-2 बड़े शॉट तो अभी होने चाहिए स्कोरिंग में। फिर से प्रयास था, कोशिश बढ़िया थी ऑन साइड पर खेलने की, और इसी के साथ आउट। तो बड़ी सफलता मिलते हुए विकेट नंबर 4 वापस निकलता हुआ टीम का। न्यू बैटर रोहन सालगावकर, और एक ऑलराउंडर खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए।
रोहन सालगावकर और उन्हीं के साथ नरेश असोंडेकर, दर्शन बांदेकर आउट होकर वापस। इस मैच में कोई खासा खेल नहीं हुआ, सिर्फ एक रन बनाकर आउट हुए। खेल अभी भी पांचवें ओवर का। सुहास पवार गेंदबाजी पर और एक सफलता मिली। बैक टू बैक दूसरा और एक धक्का लगा। विकेट नंबर 5वां वापस निकलता हुआ अमेजिंग क्रिकेट टीम का, अमेजिंग सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम का। ऑक्सफोर्ड टाइटंस क्रिकेट टीम उन्हीं के साथ मुकाबला करती हुई। काफी महत्वपूर्ण मुकाबला है ये दोनों के बीच में। जो जीतेगा वो आगे बढ़ेगा। और एक नए बल्लेबाज मैदान पर। विक्रम बल्लेबाजी करने के लिए। शानदार गेंदबाजी इस मैच में भी। स्कोर वहीं पर रुका हुआ जो कि टोटल 28, 28 पर स्कोर रुका हुआ। 5 विकेट के नुकसान पर 28 लॉस ऑफ 5 विकेट। बेहतरीन शॉट इस बार। फील्डर मौजूद और जब तक इनको फील्ड कर दे तब तक शायद एक ही रन मिल गया स्कोर के खाते में। दूसरे रन की संभावना को समाप्त कर दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर ने। एक सिंगल बना, सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 29। 29 रन 5 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही शानदार गेंदबाजी सुहास पवार की। किफायती गेंदबाजी, रनों पर रोक लगा दी, विकेटों को भी चटकाया। और देखना होगा नए बल्लेबाज जो कि विक्रम नाइक, एक पर खुद के व्यक्तिगत उनका साथ देते हुए मैदान पर नरेश असोंडेकर। देखना होगा आखिरी ओवर में कौन आते हैं गेंदबाजी पर। अंतिम ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर अक्षय जोग गेंदबाजी करते हुए और सामने बल्लेबाज है विक्रम नाइक। 2 शॉट चाहिए स्कोरिंग में और देखना होगा वो 2 शॉट से रोकते हैं या बल्लेबाज ने। इस बार अपटम पर कट किया, बेहतरीन शॉट इस बार, लेकिन फील्डर मौजूद, गेंद को फील्ड करते और एक रन बना स्कोर के खाते में। अंतिम ओवर का खेल जारी, अक्षय जोगड़े गेंदबाजी करते हुए और स्कोर हो चुका है 29। 30 रन, माफ कीजिए, टोटल स्कोर 30 रन 5 विकेट के नुकसान पर। कम से कम 2 बड़े शॉट स्कोरिंग में होने चाहिए तो बिल्कुल अच्छा मुकाबला भी बन सकता है मैदान पर। देखना होगा नरेश असोंडेकर क्या करते हैं बल्लेबाजी में इस आखिरी ओवर में। अक्षय जोगड़े गेंदबाजी पर। बेहतरीन शॉट इस बार हाफ वॉली पर लेकर लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर। और जब तक इनको फील्ड करते, एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। अच्छा थ्रो, सुंदर थ्रो और अंपायर का इशारा जो कि तीसरी आंख की ओर। आइए सर, जो राजकिरण सर।
तो आउट। इसी के साथ और एक विकेट वापस निकलते हुए थर्ड अंपायर की ओर सिग्नल हुआ था, उसी के साथ जांच परख हुई और एक विकेट वापस निकलते हुए टीम को लगता हुआ अमेजिंग सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम को और एक धक्का। आज का अंतिम मुकाबला दोनों के बीच में चलता हुआ और स्कोर वहीं पर रुका हुआ। स्कोर हो चुका है 31, 31 रन। नरेश सोंडेकर आउट होकर वापस और न्यू बैटर गणेश। और दोनों अंपायरों के लिए जानकारी, अब जो निर्णय है गणेश नए बल्लेबाज। स्कोर 31, 31 रन 6 विकेट पर। आखिरी ओवर का खेल चलता हुआ अक्षय जोगड़े गेंदबाजी करते हुए। बेहतरीन शॉट, एक रन के लिए निकले तेजी के साथ। क्या दूसरा रन? हाना हाना कर रहे थे, लेकिन शानदार फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग। सिर्फ एक ही रन मिल गया स्कोर में। सिंगल के साथ स्कोर बढ़ा 32 रन पर। 32, लॉस ऑफ 6 विकेट। 32 रन 6 विकेट पर। बत्तीस रन 6 विकेट पर। अंतिम ओवर का खेल अभी भी जारी। जोरदार अपील, अंपायर के उंगली ऊपर, आउट। तो 7वां विकेट वापस निकलता हुआ अमेजिंग क्रिकेट टीम को लगता हुआ 7वां धक्का। स्कोर वहीं पर, टोटल जो कि 32 रन। 32, लॉस ऑफ 7 विकेट। 32 रन 7 विकेट पर। अक्षय जोगड़े किफायती गेंदबाजी करते हुए सफलता दिलाते हुए अपने टीम को और एक विकेट चटकाया इस स्लॉग ओवर में, अंतिम ओवर में। न्यू बैटर मुकुंद। एक दो शॉट जो होने चाहिए थे, लेकिन अक्षय जोगड़े सामने से विकेट चटकाते हुए अपने टीम के लिए। न्यू बैटर मुकुंद और दूर वाले छोर से अक्षय जोगड़े। 32, लॉस ऑफ 7 विकेट। 32 रन 7 विकेट पर। इस बार ऑन साइड पर एक जोरदार बल्ला घुमाया था, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद चलेगी विकेट कीपर के हाथों में। अच्छा ओवर, आखिरी ओवर, सफलता भी मिली और जो होना चाहिए था एक बड़ा शॉट, वो भी अब तक नहीं दिखाई देता हुआ बल्लेबाजी में। शानदार विकेट कीपिंग। पीछा किया था बाहर जाने वाली गेंद का, कट करना चाहते थे, लेकिन बाहरी किनारा लगा, विकेट कीपर ने डाइव लगा। बहुत ही शानदार कैच और विकेट नंबर 8वां चला गया टीम का। ओवर की समाप्ति हुई तो पहले 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ। बल्लेबाजी की अमेजिंग सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम ने और 6 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 32। 33 रन मैच को जीतने के लिए, 33 रन मैच को जीतने के लिए देखना होगा किस तरह से मुकाबला समाप्त होता है इन दोनों के बीच में। फिलहाल कमेंट्री बॉक्स में जुड़ जाते आइए आज इस आखिरी सफर के साथ सागर गोसावी के साथ।
So we are into the run chase. 33 runs required, and the first over will be bowled by none other than the outstation player, Darshan Bandekar. Could not do much with the bat. Let's see what he can do now with the ball in his hand. Pacey customer with a moderate run up, right arm over the stumps. Shahid Sheikh on the strike, strikes the ball towards the square leg area. There's a chance of a run out. So first delivery was a legal delivery. Ball has been pitched slightly lower than the waist height. And with that, Oxford Titans open their count. More 32 runs required. Short pitch delivery ball takes the leading edge, travel toward the short. Fine leg fielder. Good fielding inside the circle by Mateen. So another single, two on the board. Meanwhile, plays watchfully towards the mid of area, equally well fielded onto the follow through. A direct hit would have put the curtains for side check, but shy the stumps, and meanwhile, couple of runs. Score moves to 4. More 29 runs required. Can Shahid hit a sixer? Nailing on to his feet, and a wonderful strike to put the ball towards the square leg area as the power play is on. Only two fielders outside the 30-yard circle. So boundary from the bat of Shahid takes the total to 8 runs. This time a good looking drive. 3 fielders running to stop the ball. Finally, the ball has been stopped inside the circle, and meanwhile, another couple of runs. Score gradually moves to 10. We are still in the first over. More 23 runs required. Again, plays watchfully towards the covers for a single. With that, a score moves to 11. And that completes over number 1. So after completion of 1 over, score is 11. 1-1 on the board without any loss of wicket. So second over of the inning.
Lovely delivery slightly outside the off stump by Rohan Salgaonkar, resulting in a dot ball. Another good delivery ball takes the leading edge travel towards the gully fielder. Another single takes the total to 12. More 21 runs required. Now Pritham Bari is on the striking end. So far he has been quiet in this inning. Has scored only a single. Let's see whether he can get the momentum, whether he can shift the gears. Swings the bat hard. Ball takes the inside edge of the bat, travels towards the square leg fielder. Slight fumble, but no harm done. Both the batsmen settle for a single. And that single brings Shahid on to the striking end. Meanwhile, another single. So it's a wonderful strategy. They knows that runs are much lesser than the remaining deliveries in this inning, so not taking any risk. But if anyone has to take the risk, then it will be definitely Shahid Sheikh. Again, a wonderful strike, but along the carpet, straight to the fielder at the square leg. Slight fumble, but no harm done. Another single. This time, a much convincing shot from Shahid Sheikh through the covers, and what a strike. The ball looks to be have covered the distance. We are waiting for the umpire's signal. And yes, that is a wonderful strike through the covers from Shahid Sheikh. And he is the man in charge at the moment, taking care of scoring the runs and that is been set as a target. And that sixer takes the total to 21. More 12 runs required from here on. Let's see who is going to bowl the third over. There's a wonderful strike through the covers to take a single and give a strike to Shahid Sheikh. With that, score moves to 22. A good Yorker. There's a appeal from behind the stumps, but lovely delivery delivered by Darshan Bandekar. Low full toss could not do much rather than guiding the ball towards the
Fine leg fielder inside the circle. And a leg bias is the signal from the umpire. That takes the total to 23. Not a convincing shot, but will fetch a single. Meanwhile, there was slight fumble, but no harm done. Just a single. With that, score moves to 24. More 9 runs required. Oh my dear, that was a quick delivery delivered by Darshan Bandekar. Even there was a bounce that has helped the ball to travel quickly to the keeper. And definitely looks to be more overs are remaining. And the body language of the fielding side tells the story itself. Meanwhile, a sweet connection. Is it going to get the distance? No, it doesn't, and the catch has been taken on the second attempt. The first wicket back to the pavilion. So new man in is Abdul Salam, who is popularly known as Shakil. So now we are into the fourth over, and that will be bowled by Varad Dabulkar. Score moves to 24. Exactly 9 runs required. Can Pritham get these required runs within this over? That is a big challenge in front of him. And let's see how he is going to take that challenge. Strikes the ball. Meanwhile, a ball goes away from the fielder and a single is on. That will bring Abdul Salam on the striking end. Abdul Salam is also a very shrewd all-rounder, and every local team will have him in their dugout, and that is why he is the most expensive player in this tournament. Oxford Titans going for a massive total of around more than 20,000 for this guy, and now he's promoted up the order. Leaves the ball, senses that ball will travel safely to the keeper down the leg stump. But as the original position is been shifted, that is the reason it wasn't called as a wide. Because the original position of the batsman matters as per the modern rules. And with that, a single to be added to the total score moves to 26. More 7 runs required from here on. Pritham on the striking end. Can Pritham strike at least a boundary? Whether he is capable enough, although he has come to open the account, open in the second inning in this run chase, but so far not a convincing shot has come from the bat of Pritham. Maybe he was taking his time as Shahid was his partner. Ball going way outside the off stump, wanted to guide the ball towards the third man. No connection, but meanwhile, wide is the signal. And that wide takes the total to 27. 6 runs more required.
And now the question in my mind, whether Pritham has enough power, whether he can hit a six. That is a wonderful strike. Fielder looking to be under the ball, but only to watch the ball sailing past. And a wonderful way to finish off in a style. Pritham Bari, the player to finish the match with a sixer. Congratulations, Oxford Titans, as you are the second team to qualify into the semi-finals. So now it's time to give up a man of the match. Requesting Manoj Bhai to kindly do the honors.